Okay. Hello, everyone. Welcome to our podcast. This is for our e-commerce application course. My name is Saud. This is Javeria. We both are MBA students, and we have Mohammed Daniyal Tariq with us. So a little introduction of Daniyal. Daniyal has essentially climbed the ladder from being a sales trainee at National Foods to being an assistant brand manager sauces there. He has successfully bridged the gap between offline retail and e-commerce, uh, managing massive campaigns that significantly expanded the brand's digital footprint. So we're very lucky to have him here. We'd love to talk about his journey there and get some insights. Welcome, Tanya, to the podcast. Thank you so much, guys. वैसे इतना blindly here, Very nice. but very early in my career. But thank you so much for the kind words. And yeah, let's get into it. Asha, so Javeria has already covered some parts, but can you please tell us about yourself and your experience? Yeah, so I graduated in 2020 with my BBA degree, जो कि हर कोई करता है पाकिस्तान में. ठीक है. उसके बाद when I graduated, it was the start of COVID. So last semester हमारा जो है ना वो it became a semester that was offline. तो हम सबको पास कर दिया था उन्होंने. So yeah, for better or worse. ठीक है. Then job hunting was again a challenge because a lot of organizations had stopped hiring. Anyway, so मैंने apply किया था to multiple organizations. One of them that I wanted to go to was National Foods because I feel like FMCG space Pakistan के अंदर globally it's not the most exciting space to be in, but उस वक्त पाकिस्तान के अंदर this was a good space to be in. You get to work with one of the best people in the industry. There's a lot. These are big brands that are consumed by millions of people. मतलब जो sauces मैंने बाद में किया है उसका जो customer base था, that was almost the size of जो UK की आबादी है, right? So that's the kind of impact you're looking at with these brands. So I applied to National Foods. It was like a long process, multiple interviews, and I got there into their management training program, which was in sales. Udhar sales के अंदर then I got into like a territory manager role of sorts with multiple projects जो आपको as a management training मिलते हैं to do. The work there was an interesting experience. There were a lot of goods, there were some bads as well. तो मुझे था कि यार sales is fun. उससे पहले मैं internship कर चुका था smile industries के अंदर in trade marketing. So I knew a bit about sales. And मुझे था कि it's fun because I think one of the things that really went for me in sales was that I am somebody who's good with people management in terms of building relationships, managing expectations वगैरह. तो sales में आपको बहुत ही काम करना होता है. That was fun. फिर उधर से जब मैं सेल्स में ही था तो ई कॉमर्स नेशनल फूड ने स्टार्ट किया था. उनका अपना एक वेबसाइट है मेड इजी के नाम से. सो मेड इजी उस वक्त डिलीवरी भी कर रहा था क्योंकि कोविड में देयर वाज अ अपसर्ज इन ऑनलाइन बाइंग across the country because people didn't want to go to the store because the risks that it carried. तो उधर फिर मैंने जो है वो जो मैनेजर थी उस डिपार्टमेंट की मलाइका सिंह, शाउट आउट टू मलाइका, अमेजिंग बॉस, लेटर मेरी बॉस भी थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल in my career who have helped me, like learn and grow. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार जो बंदे की जगह मैं मॉडर्न ट्रेड में मूव हो गया था. पहले मैं जनरल ट्रेड में था, देन आई मूव इनटू मॉडर्न ट्रेड. उसकी जगह उन्होंने मुझे, जिस बंदे की मूव हुआ था तो वो मैनेज कर रहा था लॉजिस्टिक्स ऑफ डिलीवरी क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूशन से डिलीवरीज होती थी. तो उधर से उन्होंने कहा कि नहीं मैनेज इट. श्योर, नो वरीज. So I got into it. It was very interesting. So she was like, because I was doing a decent job, she was like, can you manage नॉर्थ और जो सेंट्रल रीजन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो जो पीओसीज हैं उनको भी मैनेज कर लो. आई वाज लाइक हाँ. फिर उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया तो मैंने कहा प्लीज मुझे ले लें डिपार्टमेंट में. सो आई मूव टू ई-कॉमर्स एज एन ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट इन अराउंड November 2021. उधर then I worked for like 7-8 months before I got promoted to an ABM position in e-commerce. E-commerce was more about P&L management, account management, marketing. It was like working in a startup because the department was new, like formally department established. हमने साथ किया था CEO को, अब्रार साहब को presentation देके, approval लेके, and वो बहुत ही exciting. I think one of the most exciting roles that I've been in. Worked there till as an ABM there from July till June 2023. फिर उधर I was moved into the brands team because e-commerce में सीन ये था कि एक stagnation आ गई थी in terms of growth, because उसके बाद उस रोल के अंदर there was मतलब मैनेजर ही बन सकते थे आप. सही है. There was not a lot of learning. There was learning of course, but
brands learning was a lot more enticing, और senior management को ये अंदाजा हुआ कि यार maybe he's been doing well, so let's move into a good brand. तो मुझे जाना भी था, aspiration थी ABM बनने की. So I was moved to the sauces brand. It's the largest sauces brand in Pakistan with over 60% brand share across the country. Millions of customers. तो उसके अंदर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम किया. अगेन P&L हो गया आपका, सप्लाई चेन के साथ जो ब्रांड की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है, फॉर्मुलेशन होती है, तो उन चीज़ों पे काम किया. तो एक्साइटिंग जर्नी सो फार. फिर मैं यूके आ गया मास्टर्स के लिए. That's how the journey's been. Incredible. So an interesting thing you said was you moved from sales to brands. So a lot of, I don't know if they wish, but I assume it helps. Do you think your sales experience helped with your marketing role? Have you the decisions you took as an assistant brand manager, did they help? Yeah, it does. It does. So sales का सीन ये है कि sales is equivalent is the grind. Yeah. अगर आप कराची के अंदर अगर आप सेल्स में ना, तो you are grinding, right? Because Yeah. it's probably one of the most difficult cities or regions to cover. Why? Because कराची के अंदर ना एक बहुत ही diverse set of population है, ठीक है? Yeah. आपको अगर आप चले जाते हैं, क्या कहते हैं, what's that place called? बनारस की साइड पे अगर आप चले जाते हैं कराची के अंदर, तो बनारस में एक बहुत ही एथनिकली बिहारी ड्रिवन पॉपुलेशन है, ठीक है? अगर आप वहीं से उठ के आप चले जाते हैं सोराबगोड़, तो वहां पे पश्तून पॉपुलेशन बड़ी है, Yeah. ठीक है? अगर आप वहां से चले जाते हैं जौहर से जो उधर है मलिक कैंट की तरफ जो रास्ता जा रहा है, गबूल चौरंगी वगैरह, उधर सिंधी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? आप नाजाबाद आ जाते हैं तो थोड़ी सी उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा. तो जो डाइवर्सिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा है. और फूड कैटेगरी में जब आप काम करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आपकी जो ट्रेडिशंस है ना घर के अंदर, उनका कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इन योर कंजम्पशन डिसीजंस. That's true. और यही सीन पे दुकानदारों का होता है, राइट? सो एंड कराची इज अ सिटी जो बहुत ही हसली है इन इट्स इन इट्स सोल. Very You like know, quick. it's like Very quick. it's yeah, very quick, working all the time. People don't necessarily care कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है. सही है, इट्स ऑल अबाउट कि यार मेरा काम सही चलना चाहिए. एंड राइटली सो, बिकॉज इट्स लाइक द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? देयर इज नो स्टेट बैक्ड लाइक सेफ्टी नेट्स. तो अंडरस्टैंडेबली तो उधर जो है ना, लाइक एवरी सिंगल ब्रांड वांट्स टू विन कराची, क्योंकि सबसे बड़ा. और कराची के सीन देखें, कराची के अंदर जैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि पेशावर के अंदर नेशनल फूड्स वो यूज्ड टू सेल लाइक एनीथिंग केपी रीजन के अंदर, ठीक है? बहुत सारी पश्तून पॉपुलेशन कराची आती है फॉर इकोनॉमिक रीजंस. जब वो कराची आते हैं तो उनको कराची के खाने मिलते हैं. अब शान इज वेरी स्ट्रांग इन कराची, राइट? तो जब वो वापस घर जाते हैं ना फॉर वेकेशंस या गोइंग बैक फॉर गुड, अगर उनका वहां पे सेटअप हो गया, तो वो फ्लेवर्स लेके जाते हैं. And what happens is then you go to KP and 20 years later you see Shan is selling a lot more, or maybe as much as Nashan is selling. So the way the population carries food products, yeah, like the taste basically, across the country from Karachi, तो Karachi is everybody's priority. और सारे हेड ऑफिस कराची होते हैं, तो एवरीबॉडी वांट्स कि कराची को जीत लें, क्योंकि जब मार्केट विजिट होगी तो फिर अपना ब्रांड नजर आना चाहिए. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बाय द वे. तो आई थिंक सेल्स का बड़ा इसमें ना बड़ा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट इन टर्म्स ऑफ के हाउ डज द एग्जीक्यूशन टेक प्लेस एट द राइट वेरी फ्रंट लाइन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. एंड वहां पे जाके आपको समझ आती है कि यार अगर मैंने मार्केटिंग प्लान बनाया है, किसी ने मुझे बना के दिया है, तो यार इसमें ये लूप होल्स हैं, ये मसले हैं इसके अंदर. So when you are there making that plan, you are considering all of those factors. And what it helped me with was one of the projects I was working on was the Faisalabad के अंदर थोड़ा हमारा market share का issue था, तो उधर उस project पे मैं काम कर रहा था. तो one of the things that I did as a part of my strategy was I engaged the sales team. तो मैंने सेल्स टीम के साथ जाके मार्केट विजिट करी, सेल्स टीम को एंगेज किया अपने डिसीजंस के अंदर, कैटेगरी टीम, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, रिसर्च टीम. तो वो जो एक और एडिशनल एलिमेंट आ गया ना, जो थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया, तो उसके बाद जो हमारी कैंपेन हुई फिर वो काफी सक्सेसफुल हुई, बिकॉज इनसाइट्स अच्छी मिल जाती हैं. तो आई थिंक सेल्स रियली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड
डेटा इंसाइट्स, क्योंकि आपको डेटा पे काम करना होता है, और दूसरा कि यार एग्जीक्यूशन के अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं किसी भी ब्रांड के. But did you find yourself fighting with the sales team also sometimes? Yeah, were you like an advocate of sales when because you were from sales? यार क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स का थोड़ा रहता है टसल. ऐसा ही है, मार्केटिंग सेल्स का हमेशा टसल रहता है, हर कंपनी में रहता है, हर कैटेगरी की कंपनी में रहता है. आई थिंक फॉर मेरा काम ये होता था कि मैंने सेल्स वाले से जाके मार्केटिंग के लिए लड़ना है, सही है, और मार्केटिंग के पास जाके या डिजिटल टीम के पास जाके या अपनी बॉस के पास जाके मुझे सेल्स वालों के लिए लड़ना है. That's what I have to do, because at the end of the day it's bringing the teams together on the single page, right? Sales में मजा ही आता था कि I remember I did this market visit and the person didn't know that I was from sales. सही, so he gave me this full on जो sales का मंजन होता है ना हर market visit में जो आप बेचते हो कि देखिए नहीं everything is all right, ठीक है, marketing campaign आप ज्यादा नहीं चला रहे, आप engage करेंगे तो लोग, that's what they tell you, right? So then at the end of that market visit or the middle of it, मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, तो हम चाय पीने बैठे, फिर I was like सुनो ये आपने मुझे कहा है, इसका ये आंसर है मेरे पास, सेल्स से है क्या? एंड आई वाज लाइक, तो वो आई थिंक वाज वेरी हेल्पफुल. आई थिंक दैट इज व्हाट आई होल्ड नंबर 1. जस्ट गेटिंग नंबर 2 मे बी आफ्टर डेटा, वेयर आई एम लाइक आई थिंक आपको it's more difficult for people to fool you is what I would say, because everybody's trying to like project their best self whenever you do a market visit. So I think वो तो फड्डा वड्डा होता है यार, पर at the end of the day you also understand their point of view, so it's an argument that is for the betterment of the brand, A, which is very important, and B, when you understand the other side then you have some empathy कि यार okay ये सही कह रहा है, perhaps दोनों साइड की इनसाइट्स हैं तो you can better navigate the problem. Exactly, and obviously insights limited ही है, because sales का सीन ये है कि मैं एक टेरिटरी मैनेजर था, या मैं एक की अकाउंट मैनेजर था, या मैं नेशनली सिर्फ ई-कॉमर्स चैनल को देख रहा था, तो there's only so much you know, and that is very important to understand कि there's only so much you know, it's not all replicatable to like across the board. आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ की चीजें होती हैं जो सिमिलर होती हैं across the board, and that's what you pick up and you're like okay, this is what I'll use when I make my marketing strategy for my brand. Okay, so एक last question आपके sales experience से related है कि you moved from like a sales management trainee to focusing specially on sauces over the course of your career, right, at National Foods. Yeah. So what was the biggest shock to you, or how is selling a bottle of ketchup different from like building a brand around it? यार दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, सेलिंग और बिल्डिंग अ ब्रांड अराउंड इट. दो आप लोगों ने पढ़ा होगी स्ट्रैटेजीज होती हैं, पुश एंड पुल, ठीक है, स्ट्रैटेजी. Yes. And honestly speaking, again, I could be wrong here, but I've seen a lot of people talk about one or the other being better than each other. I feel like they have to coexist for any brand to be successful, especially a mass FMCG brand. तो वो बड़ा जरूरी है कि आप when you say building a brand, आप सेल्स वाले हो या आप मार्केटिंग वाले हो, सही है. एट द एंड ऑफ द डे आप ब्रांड ओनर हो और आप कस्टमर फर्स्ट सोचते हो, ठीक है. मार्केटिंग वालों के लिए ऑब्वियसली कस्टमर इज क्लोजर बिकॉज दे आर देयर कस्टमर इज द कंज्यूमर, सही है. सेल्स वालों का कस्टमर दुकानदार होता है. But if you understand the brand, if you understand the consumer, which is why I feel like all organizations need to have their sales team interact with the marketing team and the market research team so that they can understand the power of the brand or the struggle of the brand at that point in time. And I think that's when they can cohesively work towards selling that product better and also, building a brand around it. क्योंकि देखिए दुकानदार का जब आप बेचते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. मेरा एक दुकानदार था when I was working in key account, तो मेरा एक दुकानदार था ये गार्डन सुपरमार्ट के नाम से, गार्डन एरिया के अंदर है सदर के पास. तो उसके पास ना उसने शान को वो डिपेट को और उनको शंगरीला को ज्यादा जगह दी हुई थी केचप पे. उस वक्त मैं सेल्स में था, सही है. आई वाज सेलिंग नेशनल केचप, राइट, अमंग्स अदर ब्रांड्स जो नेशनल में बेच रहा था. तो उसको ये था कि यार शंगरीला बिक रहा है, नेशनल भी बिक रहा है. उसका मिक्स वाज अराउंड 50% शंगरीला, 50% नेशनल, मतलब 40-40 एंड देन 20% में बाकी सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, नॉर वगैरह. या क्योंकि नॉर इज बिग इन सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, बट इट्स नॉट वेरी बिग इन द मास मार्केट.
तो वो सब आ जाते हैं। तो पिछले सारे लोगों ने उसको बोला कि अपनी स्पेस बढ़ा दो, शेल्फ पे स्पेस बढ़ा दो, पर उसको था कि मैं क्यों बढ़ा दूं, मेरे साथ शंगीला भी तो काम कर रहा है, राइट? बट बिकॉज आई वाज समबडी हु वाज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो मेरे पास एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा था, सही है। दोस्तियां थी मार्केटिंग के अंदर क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग से सारे, ठीक है। और मेरा थोड़ा ऑलवेज बिन के डेटा सेंट्रिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेलिंग, राइट? सो आई न्यू दैट द सॉसेस ब्रांड शेयर इन कराची इज मोर देन 60%, ठीक है। तो परहैप्स अगर आप जो है वो 10 पैकेट शंगीला के रखोगे जिसका 20 कुछ परसेंट ब्रांड शेयर है, ठीक है, सो इट वोंट सेल एज मच बिकॉज कस्टमर को तो नेशनल चाहिए ना ज्यादा। तो 10 का स्पेस अगर आप शंगीला को दे रहे हो तो 10 पैकेट बेचने के लिए आपको 40 कस्टमर्स का थ्रूपुट चाहिए स्टोर के अंदर। If that makes sense, right? Whereas to sell 10 packets of national, you only need around 16, 17 customers coming into the store. Yeah. So by that logic, if you increase the shelf space for national, the visibility for national, you are going to sell out more often. विच मीन्स कि आपका जो इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है ना उस सॉस के अंदर, जो आपने 100 रुपए 200 रुपए का पैक लिया हुआ है, वो महीने में वो 100 रुपए शायद 10 दफा रोटेट हो जाए, सही है, जिसमें अगर आपका 10 रुपए 15 रुपए प्रॉफिट है तो आप 150 रुपए प्रॉफिट बना लो, कंपेयर टू शंगरीला जो आपका 3 दफा रोटेट होगा और आप सिर्फ 45 रुपए प्रॉफिट बनाओगे। अब ये चीज दुकानदार को एक्सप्लेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स देम अ पर्सपेक्टिव ऑन टू व्हाई दे शुड सेल योर ब्रांड। So that's how, I would say it's different selling a brand and building a brand because आप दो अलग थोड़े से demographics, दो अलग लोगों को target कर रहे हो, अलग लोगों से बात कर रहे हो, but you have to keep the consumer in mind at all times because if you don't sell it at the right place or if you sell it at the wrong place, if you place it at the wrong place, then you're perhaps not going to sell as much. Right. So अगर हम शिफ्ट की बात करें ब्रांड से, ट्रेडिशनल एफएमसीजी ब्रांड मैनेजमेंट जो होती है वो इट्स अ लॉट अबाउट लाइक फिजिकल शेल्फ, आपकी आई लेवल प्लेसमेंट और ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हम बात कर रहे हैं। और जब हम नेशनल फूड्स को आप लोगों ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया तो मतलब हाउ डिड द shelf presence translate to a mobile screen? Like what was that like? Right. So when I talk about e-commerce ना, e-commerce की dynamics थोड़ी सी फर्क है conventional trade से, ठीक है। And I will explain it like this कि अगर आप एक रिटेल में अगर आप चैनल्स की बात करो तो आपके 3 broadly speaking key channels होते हैं। You have your general trade, which is your kirana stores. Yeah. You have your supermarkets like your Imtiaz, Carrefour, Spars, Al Fateh for Lahore and all. And then you have your e-commerce platforms like Daraz, Food Panda, Cheete Vita, I don't know बंद हो गया है क्या है, Brave, I think it's still working, right? बाकी तो सारे बंद हो गए, right? So ये आपके 3 मेजर चैनल्स हैं, ठीक है। अब आपको सोचना है एज अ मार्केटर, एज अ सेल्स पर्सन कि हाउ डज द कंज्यूमर इंटरैक्ट विद दीज चैनल्स, ठीक है। अगर आप किराना स्टोर पे गए हो, आप सब गए होगे किराना स्टोर में, ठीक है। हाउ डज दैट वर्क लाइक? द वे इट वर्क्स लाइक यूजुअली इज, एंड डू करेक्ट मी इफ यू डोंट एग्री विद मी बिकॉज़ दिस विल बी अ कन्वर्सेशन, आई वुड लव दैट। किराना स्टोर के अंदर जब आप जाते हो तो आप दुकानदार को बोलते हो मुझे केचप चाहिए या मुझे नेशनल केचप चाहिए, ठीक है। आपने अगर उसको बोला नेशनल केचप चाहिए, वो आपको उठा के या तो नेशनल केचप दे देगा या बोलेगा यार ये तुम ट्राई करो, ये बहुत ही रैंडम ब्रांड पे केचप डाल लो, बट हलीब की केचप आई है, सही है। You never know, right? You never know, right? So हलीब की केचप आई है, ट्राई करो, सही है, दिस बहुत अच्छी है। अब उस दुकानदार से आप परहैप्स 20 साल से शॉपिंग कर रहे हो या आपके माँ बाप शॉपिंग कर रहे हैं, आपने बचपन में वहां से चिप्स और चॉकलेट्स लिए हैं, अंकल बड़े स्वीट से हैं, आंटी बहुत स्वीट सी हैं, यू लाइक यार ये तो बंदा फिट है, बंदी फिट है, इनसे उठा लेते हैं, इन्होंने कहा ले लेते हैं, कैसे भी तो है, ठीक है। वहां पे मार्केटिंग शेल्फ स्पेस जो आपने बात की, दैट्स मोर ट्रेड मार्केटिंग। So your trade marketing and your margins and your team's relationship with that retailer can impact the customer's consumption. सही है, because there's a middle person who can influence, right? When you move to a supermarket, वहां पे कोई ब्रांड एम्बेसडर खड़ा हो तो खड़ा हो, ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं है उस तरह की। ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर खड़ी होगी, खड़ा होगा, वो आपको आके बेचेगा, बट इट्स ऑल अबाउट शेल्फ स्पेस, किस आई लेवल पे है या नहीं है, शेल्फ ब्रांडिंग क्या है, प्राइसिंग इज पाकिस्तान
even the UK, these are big markets on price because a lot of working class people, a lot of people with smaller disposable incomes means they have to make the right decision, right? Again, pricing, your visibility. अब shelf में fun fact, आपकी एक एक्टिविटी जो हमारे कंट्री हेड है तो वो हसन सरवत ने कहा था और मैंने वो करी भी थी, वर्ल्ड के आप चले जाओ सुपर स्टोर में और जाके खड़े हो जाओ और सिर्फ ऑब्जर्व करो कि कहाँ से बंदा आ रहा है, कहाँ से बंदा निकल रहा है. यू कैन अंडरस्टैंड कि उस आइल केचप के आइल में कहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं. एंड देन यू वुड नो कि वेयर टू प्लेस योर प्रोडक्ट. लाइक ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट एंट्री पे फर्स्ट नहीं होना चाहिए आपका, बिकॉज दैट्स द आइल जिसमें ट्रॉली अंदर जाती है. So by the time the person is in, they will probably skip the first one. So where do you put it is then another science, right? So a different channel, a different way of interacting with the consumer. When you come to e-commerce, right? That's where the consumer is the closest to the brand because you can work with ads, you can work with different offers, discount offers and all of that. You have your keyword optimization. कि अगर बिरयानी किसी ने सर्च कर दिया पांड्या मार्ट पे जाके, जो मैंने किया था and it worked well for the brand, सही है, तो वो नेशनल की बिरयानी आ जाए, या केचप करे तो नेशनल की केचप आ जाए, सही है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उधर बहुत सारी तुम्हारे आपके मार्केटिंग एसेट्स खुल जाते हैं टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर. सो दैट्स हाउ इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर इट वाज मोर लाइक डिजिटल मार्केटिंग प्लस सेल्स कमिंग टुगेदर and working towards ensuring that आपका सबसे ज्यादा conversion हो सके. So that's how it was different. Similar in a sense कि आपने availability करनी है, visibility log करनी है, pricing सही होनी चाहिए, product दिखना सही चाहिए. All of them very similar to other channels of trade. But I think one thing that was different was कि you have the access to marketing assets that you can deploy to ensure that your consumer की जो customer journey है ना, it's very important to understand customer journeys on digital platforms. उसी कस्टमर जर्नी के अंदर आप हर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो पॉइंट होगा ना उसका, उस पॉइंट पे आपका ब्रांड नजर आ जाए. कि अगर वो होम पेज पे है तो वहां पे कैटेगरी के अंदर नेशनल की रेसिपी या केचप उसको नजर आ रही हो, जो कैटेगरी के वो बने होते हैं ना, कि सॉसेस कैटेगरी, रेसिपी कैटेगरी, उसमें नजर आ जाए, बैनर्स नजर आ जाए उसको, कोई ऑफर चलिए अगर आपकी तो सर्च करें तो आपका ब्रांड आ जाए, सही है, चेकआउट पे आ जाए, सजेशन के अंदर आ जाए. So multiple places to place your brand and ensure that the customer is exposed to it multiple times or at least once through the journey. अच्छा, जो जैसे ट्रेडिशनल एफएमसीजी में तो लाइक यू आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर्स, द रिटेलर्स, द होलसेलर्स फॉर योर सेल्स. लेकिन आपने जैसे मेडीसी की बात की कि मेडीसी वाज द प्लेटफॉर्म जो नेशनल फूड ने खुद लॉन्च किया था और वो डिलीवर कर रहे थे कोविड के दौरान. तो वो एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कंट्रोल, डिड दैट हेल्प विद एंगेजिंग विद द कंज्यूमर? Made Easy was a tricky channel, is what I would say. Yeah, देखो, Made Easy was made sense during COVID, सही है, because we had monthly bundles. ठीक है, अब आपको किचन में जो भी स्पाइसेस, केचप, सॉसेस, सिरका सोया सॉस चाहिए, केचप चाहिए, मेयोनीज चाहिए, मसाले चाहिए, अचार चाहिए, सब देंगे, सही है, लोग खरीद रहे थे. ठीक है, बट मेड इजी का चैलेंज ये था कि मेड इजी वाज अ प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ आप नेशनल के प्रोडक्ट्स खरीद सकते. अब आप इसको ऐसे ही सोचो कि जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स इन अ वे दैट यू वुड वांट टू गो टू अ प्लेस जहां मल्टीपल चीजें मिलती हैं, सही है, especially for a low energy decision. I forgot there's a term in marketing for लो it. इन्वॉल्वमेंट ना. Low involvement, right? Thank you. लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन. गाड़ी खरीदना आप किया के शोरूम पे जाओगे कि आप रिसर्च करके जाओ किया कितने में, ठीक है, इम्तियाज से आप गाड़ी नहीं खरीदोगे. exactly. I'm sure someday people will be buying bikes from Imtiaz. Yeah, But it must be. yeah, जिनके लिए लो इन्वॉल्वमेंट होगा वो तो खरीद सकते हैं, मतलब. यार सस्ती अगर मिल रही है बाइक 125 ही होंडा की तो फिर बंदा क्यों नहीं लेगा. So It's that's like the important same. in branding. If your brand is strong enough, it doesn't matter where you're selling it, people will go and buy from there, right? But the thing is कि नेशनल फूड्स का, और देखो दूसरी बात ये है कि अगर आप रेसिपी का डब्बा उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त होता था 130 रुपए का डबल पैक. ठीक है, I think it's तो 160, 180 right now. वो तो सिंगल पैक होगा 180 का, हाँ, क्या डबल हाँ, पैक है, हाँ. सिंगल पैक, राइट. तो डबल पैक को 150 का होता था ऐसे ही, सही है. अब 150 रुपए का डबल पैक है, ठीक है. आप मुझे बताएं रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हाउ मेनी पीपल, साउथ, हाउ मेनी पीपल इन योर हाउस? Five. 5 people, right? How many people in your house?
A lot. 8. राइट? सो आप कितने डब्बे ले लोगे रेसिपी के? Don't ask me culinary questions. I do not know. I तो व्हाट don't व्हाट quit. यूजुअली हैपेंस इज कि आपकी जो मंथली ग्रोसरी होती है ना, जिसमें नेशनल के प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वैल्यू 2000 पे आ जाएगी, बहुत आ गई तो हाँ, 3000 पे आ अगर उस जाएगी। शेयर आप देखो नेशनल का बास्केट के अंदर। in your basket, grocery basket, तो that's very less. Yes. बिकॉज वो कैटेगरी लो प्राइस कैटेगरी है ना, Yeah. Yeah. ठीक है? टू गेट 100,000 रुपीज ऑफ नेचुरल रेसिपी यू नीड 10 सिंगल पैक्स, ठीक है? उस वक्त अब 10 सिंगल पैक्स का मतलब ये है कि आप उससे मतलब बहुत ज्यादा खाना बना सकते हो, ठीक है? दावतें हो रही है रोज बेसिकली घर हाँ, पे। हाँ। तो होता ये है कि कस्टमर जो है ना, वो अब वो एज अ ब्रांड अब आप बेच रहे हो उनको, ठीक है? अब कस्टमर पहले ही कह रहे हैं यार मैं इधर से क्यों लूं जब मैं फूड पांडा से जाके वही चीज ले सकता हूँ, सही है? तो फिर आपके With पास more options, like with I have all the option in एग्जैक्टली the world. कि अच्छा, मैं बिरयानी अगर बनानी है तो वहां से डब्बा भी मिल जाएगा, दही भी मिल जाएगा, चिकन भी मिल जाएगी, टमाटर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? um, तो ऑलरेडी दे वर लाइक नो, दिस इज नॉट इट, ठीक है? सेकेंडली अब आप कैसे करोगे अट्रैक्ट कस्टमर को? प्रोडक्ट तो सेम ही है, आप प्राइस पे करोगे, सही है? तो प्राइस आपने जहां डिस्काउंट खत्म होगा, कस्टमर बोलेगा नॉट वर्थ इट एनीमोर, चला जाएगा। हाँ, इट डजंट मेक राइट? सेंस फॉर हिम टू So स्टे। then हाँ। you are basically selling your product for a cheaper price just so that the customer will buy it. And हमने जब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखी तो वो बहुत हाई थी और उसकी जो लाइफ टाइम वैल्यू थी वो बहुत लो थी। तो फिर हमने डिसाइड, और हमारा जो पीएनएल था वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था उस पे, इसकी वजह से। तो फिर हमने उसको डिसाइड किया कि विल क्लोज इट डाउन, बिकॉज एज अ चैनल unless you are selling something that is not available in the market, किराना स्टोर्स पे या सुपरमार्केट्स पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे, or it's something that is a high involvement product, selling it through your own website doesn't work. I think श्रृंगला वगैरह ने स्टार्ट की थी जब मैं बन कर रहा था उस वक्त, एंड देख के उन्होंने भी की हुई है। तो then Made was made into a platform that was more for recipe content, Yeah. empowering the customer to then use and develop their culinary skills, because वो बड़ा जरूरी है। So that was what it was trying to So do. even if MadeEasy didn't work, like you almost got your competition to invest in a Oh, I dangerous was project loving आपको it. देख के। When I got the news of it, I was like, great Good job, job. guys. बेहतरीन. अच्छा, एक अभी और जो मेरे नकल के दिमाग लिए में थोड़ी सी अकल चाहिए। खैर, anyways. क्वेश्चन पूछने के बाद ही मुझे ख्याल में आया कि कंसिडरिंग कि 110 का अगर पैकेट था 2021 में, तो वो डिलीवरी कॉस्ट ही उसकी 200 होगी। तो आई मीन पांडा मार्ट दराज से तो इट मेक सेंस बिकॉज ज्यादा चीजें मंगवा रहे हो उधर, तो इट मेक मल्टीपल हाँ. कॉस्ट है ना, उसको क्या कर वेयरहाउसिंग की रहे थे कॉस्ट यार है। आप लोग? वेयरहाउसिंग कॉस्ट है आपकी, आपकी डिलीवरी कॉस्ट है, आपका ह्यूमन कैपिटल है, आपका एनर्जी लग रहा है उधर एज अ रिसोर्स। अगर मैं उस पर 10 घंटे लगा रहा हूँ हफ्ते के, तो मेरी एक सैलरी है ना, उसकी कॉस्ट आ रही है उस पर। Yeah. तो it was the maybe a good experiment for the time that it was done in, right? There was a lot of learnings from it. So yeah, but in the long run, in a post-COVID life, this will make sense. Yeah. Okay, so हमने we've heard a lot about bundling in Q-commerce, right? Yeah, you buy a frozen snack, you get a discount on ketchup, या छोटा पैकेट आपने फ्री में दे दिया। तो how vital were the partnership with other categories ये sauce division को grow करने के लिए? Yeah, so bundling, I think, was one of the best um, tactics or strategies that you could use on Q-commerce. क्योंकि होता ये है, जब आप लेट्स से आप इम्तियाज पे जाते हो, आप कहते हो मुझे बकरीद पे पेप्सी के साथ नेशनल बिरयानी को को बंडल करना। Hmm. तो आई हैव टू गो टू पेप्सी का ब्रांड मैनेजर, टॉक टू देम and try to get them to agree with me, or them to try to get me to agree with them to co-brand, ठीक है? What Q-commerce gives you is an option to co-brand without involving the brands themselves, right? उसके अंदर क्योंकि होता ये है कि then the product is the property of the Q-commerce platform, right? So they can do what they want to do with it. Of course, there are certain वो है guidelines. If they That's start nice. bundling national ketchup with शान के मसाले। yes, yes, with let's say tobacco.
I wouldn't be okay with it because बहुत फर्क National demographic है. ketchup with tobacco? I listen in B2B e-commerce ये बड़ा common था. टोबैको के जो नहीं बिक रहा उसको टोबैको के साथ बेच दो क्योंकि दुकानदार टोबैको में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था क्योंकि उसकी बहुत कंजम्पशन है. ठीक है, वो एक अलग ही चीज है. But bundling is very good because, for example, I think we were the first to do bundling, if I'm correct, on the e-commerce space with the platforms like Pandamart, Cheetah, वगैरह, where we bundled. हमने basic एक insight किया कि यूके के अंदर हाइंस एंड मैकेन इज अ फ्राइज ब्रांड वेरी बिग इन द यूके. हाइंस आपने समझे सुना होगा, केचप का ब्रांड. They have done multiple co-branded campaigns with each other, with billboards, e-commerce, offline, हर जगह पे. And when I say what do you eat ketchup with, और ये हमारी रिसर्च में भी सामने आया कि fries is probably the number one contender, right? कि fries के साथ तो सब खाते हैं. ठीक है. So we were like, might as well try it out as a bundle. So that's what we did. We gave a certain discount. If you buy a pack of fries, you get ketchup at a certain discount. इसी तरीके से कराची खास जब लॉन्च हुआ था नेशनल का, so I worked with the Pandamart team, और Pandamart बकरीद पे मीट वाला भी करता है, जैसे मीट वन वगैरह करते हैं, इज्तिमाई कुर्बानी जिसे आप बोलते हो, तो मीट वगैरह करता है, सॉरी मीट वगैरह करता है. And what we did was we created a new box की ब्रांडिंग. सो वो मीट डिलीवर होता है थर्मोकोल के बॉक्सेस के अंदर. ठीक है, तो उस बॉक्स के ऊपर जो है वो नेशनल की ब्रांडिंग करी हमने, कराची खास रेंज की, और उन बॉक्सेस के अंदर हमने साशे डाल दिए, डब्बे क्योंकि पिचक जाएंगे, इट वाज नॉट वायबल एज अ फॉर्मेट, तो साशेस डाल के कंज्यूमर्स को हमने बेच दिया. सही है. अब which is what I'm coming to next is कि e-commerce is a great platform to experiment with. Because what happens is कि आपकी मार्केट छोटी है e-commerce में as of today भी. ठीक है, क्योंकि it's a premium service, right? E-commerce से Pandamart से वो ऑर्डर करता है who can afford to pay the delivery fees and the small order fees or the big order fees, or you can't escape the number of tens of fees. like fees that, and I understand e-commerce is an expensive model to execute, especially in a country like Pakistan. So value addition there is convenience, na? Exactly. So you're paying a premium for a certain convenience in your life, right? मेरा एक कोवर्कर था, उसका एक शेफ आता था दोपहर में, वो 4-5 घरों में खाना बनाता था. ठीक है, उसका शेफ. तो जब वो आ रहा होता था वो कहता था, हमजा भाई यार खाने में क्या खाएंगे. उसने कहा ये बनाना है. कहता था वो इंग्रेडिएंट्स बेचता था. हमजा जो है वो फूड पैंडा से अपने घर पे डिलीवर करता था. बाय द टाइम द शेफ पहुंचा था घर पे, फूड पैंडा का राइडर भी पहुंच जाता था और वो खाने लगे. तो ग्रेट सर्विस अगेन, राइट? You can experiment a lot. It's a smaller market, right? You need to understand कि what your exact market is on e-commerce. सही है. अब आप उसको demographically देख लो या psychographically देख लो, depending on the brand that you're working with, right? You see that market and then you can experiment on e-commerce with new product launches, with new product lines, with a new campaign, because small है और data बहुत है आपके पास. I think one of the limitations of conventional trade is that you don't get access to data as That's true. conveniently. And उस data को use करके then you can improve your decision making, or understand what worked for you, what didn't work for you. You can do A/B testing कर सकते हो आप जो targeted campaigns कर सकते हो जहाँ पे आप, और campaigns को फर्क A/B testing कर सकते हो depending on the location you are in. Maybe perhaps if you want to do it on the gender of the person who is like क्या कहते हैं buying online, or you can do it on the income strata या उनकी प्रीवियस जो परचेजेस उनको देख सकते हो कि एक इंसान जो ज्यादा मीट खरीदता है, perhaps they are the right people to target if I want to launch a poultry brand, right? So things like that. So that's how I feel bundling works really well for you because you get the chance to experiment. Also guys, just a heads up, मैं थोड़ा सा ना distracted इंसान हूँ. I move from one thing to another, so I'm really sorry. I know कि मुझे realize हुआ मैं थोड़ा सा इधर से उधर हो रहा हूँ. So just remind me to keep on track. Naturally. Yeah, because नहीं Go crazy. It's नहीं, we didn't want it to be formulaic ना, तो we're kind of hoping कि हाँ. हाँ यो एक से एक बात दूसरी बात निकलेगी and we keep the conversation flowing because we both get to learn a lot इस तरीके से. Yeah, definitely. So अच्छा, तो talking about measuring the success, ठीक है, तो उसके what are like the, let's say, top 3 KPIs जो आप लोग track कर रहे हैं quick commerce platforms पे,
कि दिस इज वर्किंग, क्योंकि अभी हम मेजरमेंट की बात कर रहे थे, टेस्टिंग की बात कर रहे थे, तो हम लाइक क्योंकि कॉमर्स में मेजर क्या कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, सक्सेस मेजर किस तरह हो रही होती राइट। सो देखिए, आपकी 3-4 चीजें होती हैं सब सक्सेस मैनेज करते हैं। पहला आपका होता है अब डिपेंडिंग ऑन कि आप क्यों मेजर कर रहे हैं, राइट। अगर आप एक प्रोडक्ट की सक्सेस देख रहे हैं तो उसका रेवेन्यू, है? या उसका मार्केट शेयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म, सही है, बहुत जरूरी है टू टू हैव अ लुक एट, राइट। ये दो बेसिक, दिस इज वेयर द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स, ठीक है। एम आई सेलिंग इनफ? अब हो सकता है मैं ₹1,00,000 का बेच रहा हूँ, बट ₹1,00,000 इन इट्स आइसोलेशन मींस नथिंग नथिंग, या एक्सेप्ट अ टारगेट दैट आई हैव अचीव्ड, ग्रेट, सो बिस्मिल्लाह। बट वो टारगेट कैसे सेट किया? मैंने सेट किया है, ठीक है। तो देन हाउ डू आई होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल, राइट। अपने सर पे वो हाँ हाँ, कराने तो बड़ा बेस्ट बड़ा परफॉर्मर। हाँ, 100%, एग्जैक्टली, राइट। कि ओ, I should do 100 lakh rupees. I did 100 lakh rupees. Great, guys. ये let's go. However, that has no meaning to it. So the way I would look at it is, from a sales perspective, is I would look at the brand share. सही है कि यार ठीक है, अगर मेरा ब्रांड शेयर और मार्केटिंग टीम जो मेरी है, या जो मेरी जो मार्केट रिसर्च टीम है, मुझे कह रही है यार आपका, लेट्स से आप बेचते हैं, लेट्स से नेस्ले, सही है, मैं नेस्ले बेचता हूँ, नेस्ले का पानी बेचता हूँ, ठीक है, और उसका पाकिस्तान में मार्केट शेयर है लेट्स से 60%, ठीक है। फूड पांडा पे भी वो बेच रहा है 65, 55, इट्स ओके, यू आर एट पार विद द मार्केट। और उस मार्केट शेयर में भी यू नीड टू लुक एट के राइट मार्केट को आप देख रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एससीसी ए देख रहा हूँ, अगर एससीसी ए के अंदर नेशनल का मसाले का जो मार्केट शेयर है, लेट्स से अगर वो 40% है, वेरस एससीसी सी में अगर वो 60% है, सही है, तो अगर फूड पांडा पे अगर एससीसी ए एग्जिस्ट करती है ज्यादा, तो फिर उधर 40% के आसपास होना चाहिए। अगर वो 60% है तो आई एम डूइंग समथिंग रियली गुड, और शान इज डूइंग समथिंग रियली बैड, ठीक है। Works for Either us, or, either yeah, either of Works us for us. works. yeah, right. अगर मैं 10% पे हूँ तो आई एम डूइंग समथिंग रियली बैड, राइट। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। व्हेन आई वाज इन ई-कॉमर्स, तो मेरा फूड पांडा मेरा कस्टमर था, तो उधर आई वाज सेलिंग all the national की range, because I was working for all the brands, right? I was the e-commerce department. तो केचप का funny enough मार्केट शेयर जो था वो फूड पांडा पे अंडर इंडेक्स था, बाय एटलीस्ट What does under 25। index mean? अंडर इंडेक्स मतलब जो मेरा बेंचमार्क है ऑफ इतना होना चाहिए मार्केट शेयर, सही है। आई कांट गिव द नंबर्स, तो मैं नंबर नहीं हाँ बता, हाँ, it's बट हाँ, okay. बट वो होना चाहिए अगर मेरा मार्केट शेयर तो उससे कम था, सही है। हाँ. So I was like, why? Right? So I was like, called up the Food Panda POC. I was like, let's have a meeting. Bring these numbers. So I asked him to bring the numbers for क्या कहते हैं केचप के जो ट्रेंड्स हैं in terms of brand share trends क्या है, to understand कि कोई depth तो नहीं आया. Second, availability. This is a sales KPI. सही है, but as a marketer, it's very important to know this. Availability. अगर प्रोडक्ट नहीं है, जो 4 P's हैं बेसिक, अगर प्रोडक्ट नहीं है अवेलेबल तो क्या ही बेचोगे, राइट। फायदा नहीं है So ना, there's exactly. no point in selling that product, because if it's not available, the customer is it's either going to go somewhere else, or he's going to buy something else, right? Thirdly, उनकी कोई campaign तो नहीं चल रही, maybe it's a proportional campaign, maybe it's a visibility campaign. What are the factors influencing the brand share is what you need to understand. When I got in the meeting, when we sat together and we had a discussion, what I found out was that कि national ketchup जो है वो अवेलेबल नहीं है महीने के कोई 15 दिन, 16 दिन डार्क स्टोर्स पे। तो अब केचप नहीं होगी तो आई एम लिटरली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी, Yeah. राइट, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। नंबर हो रहा है फूड पांडा का, केचप के टारगेट भी मीट हो रहे हैं, राइट, but it's Best not performer. as per the brand share, right? So then what am I doing, right? And that's things you learn as you progress, you know, like so I was like उमर नाम था, मैंने कहा उमर क्यों नहीं है हुआ है ये, तो टर्न्स आउट कि क्योंकि हिस्टोरिकली ही नहीं हो रहा, सही है, तो उनका सिस्टम कह रहा है कि कम ऑर्डर करो, या वो थोड़ा कह रहा है ज्यादा भी ऑर्डर कर लो, कोई कैंपेन कर रहा है उनके साथ, बट हमारा सप्लाई चेन नहीं डिलीवर कर पा रहा उनको ऑर्डर, क्योंकि हम बैक ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट है ना, सही है, पहले तो इम्तियाज हो जाएगा ना यार प्रोडक्ट, सही है। बट देन वी टॉक टू द सप्लाई चेन टीम, बिकॉज हमारा वॉल्यूम छोटा होता है, तो इम्तियाज का 1 दिन की सेल है, 2 दिन की सेल, ठीक है, मतलब दैट्स एन एग्जैजरेशन मे बी, यू नो, लाइक, बट कंपैरिजन नहीं है कोई।
So we made a deal with the supply chain team कि listen, you gonna prioritize these orders. And then फिर मैंने पार्टनर को नंबर बना के दिया कि देखो अगर तुम इतने दिन में इतना बेच रहे हो and these are the days that you're not selling and ये डार्क स्टोर्स पे गया ही नहीं प्रोडक्ट बिकॉज प्रायोरिटाइज करते हैं ना वो हाई सेलिंग डार्क स्टोर्स को so perhaps this is the order that you need to make and then उसके बाद हम देखते हैं कि how does the sales go. In 3 months of doing this activity without spending a penny on marketing we were at our benchmark brand share. Something this simple, right? So when you talk about e-commerce, availability is one of the KPIs that you need to be very much there with, On top of, yeah. on top of. But then again, symptoms आप देखो और फिर disease की तरफ जाते हो. So that's the process. You see the problem and then you see कि why is this problem happening. तो e-commerce में ये बड़ा important है. अगर आप मार्केटिंग साइड पे आ जाओगे जिसमें जो कैंपेन्स करता था उसके अंदर you look at the impressions, ठीक है? So impressions are always going to be very platform specific, right? So you look at the conversion rates, you look at आप उनसे heat map मंगवा लो कि कस्टमर का ब्राउजिंग कैसे होती है उस ऐप पे टू अंडरस्टैंड कि उस कैटेगरी की ब्राउजिंग कैसे होती है एंड देन यू लुक एट द आरओआई ऑफ द होल कैंपेन थ्रू द कन्वर्जन रेट्स वर्सेस योर इन्वेस्टमेंट एंड उससे भी आप कैलकुलेट करते हो कि आपका जो कर्व है ना जो यूटिलिटी कर्व बनता है आपका सही है जो उस कैंपेन की जो जो एफिकेसी है जहाँ पे पीक करती है then you make sure कि you spend that budget and then you know make sure that you tie it with proper availability and you tie it with proper discounts whatever you need. So that's how you measure the campaign. You look at the availability, the e-commerce KPIs, you look at the availability, you look at the market shares, you look at the revenue, you look at growth because growth is also something very nice, right? Just say for example अगर मैंने मैं example this is not the correct number but percentage में just will make proportionally बता रहा हूँ आपको मैं to give you an idea कि if I did a business of 10 rupees, right? In year 1, in year 2 I did a business of around 50 rupees and in year 3 I did a business of around 200 rupees, right? So this is the proportional growth. Now अगर यही इम्तियाज कर ले तो सब पागल हो जाएंगे because इम्तियाज are very structured, very secure, very like a channel that is very mature in its very safe, very mature channel, right? मतलब उसमें आप growth will only come from more shops opening, right? Because it's been there for a long time. E-commerce का सीन नहीं था, सही है. Q-commerce का सीन नहीं था. They are growing exponentially. The numbers were not a good KPI. But अगर आप एक mature channel को देख रहे हो, like general trade या e-commerce, या modern trade, then the KPI is always going to be a revenue could be a KPI. So you need to be intelligent about your decision making. Okay, when you look at KPIs, you look at things that are stable, and you would want to map out KPIs that range from your sales KPIs, quote unquote, to marketing KPIs, so that they're all coming together and your product is selling at the end. सही. अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था कि क्विक कॉमर्स से जो इनसाइट्स मिले होंगे वो व्हाट वर द इनसाइट जो उसने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया एंड डिड दे चेंज योर शेप योर ब्रांडिंग स्ट्रेटजी इन सम वे? Interesting question. This is a very good question. Insights that changed my strategy. Yeah, I think the first was again the availability one. I think for me it was a surprise because आप expect नहीं करते number हो रहा होता है ना कि यार कोई मसला होगा, सही है. You're like this will be another good news. It's not, and then you're like, oh, I have to wait, right? But if I talk about any other insights that I got, यार आई थिंक ई कॉमर्स की जो जो आवाम है ना क्यू कॉमर्स की वो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल आवाम है, सही है. This we realize with, and when I say experimental, guys, I know this will sound a little bit boomer, but I mean like relatively more experimental. Okay, they are more into different kind of seasonings, different kind of sauces, compared to your traditional trade. Okay, so let's say बहुत simple सी बात करते हैं. जिंजर गार्लिक पेस्ट का आपको पता है? जिंजर गार्लिक पेस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन जो बेचती हैं आज की तारीख में,
ठीक है, or at least जब मैं था 2 years ago, very few organizations that would sell ginger garlic paste. The idea of any culinary business is to descale the consumer, descale the consumer, right? अगर एक रेसिपी मिक्सेस का पैक है, what it's doing is telling you कि you didn't need to get 5 to 10 to 15 different spices and Yeah. figure out the proportions yourself. We are going to do it for you. Basically making the customer's life easier, right? Exactly. इसी तरीके से अगर आपने देखा हो शान का वो एक बॉटल के अंदर ना मसाला आता है, Yes. उसमें मसाले की भुनाई भी हुई है, राइट? कुछ भी नहीं करने का था बेसिकली। मतलब करना है उसमें, फिर भी करना है, still not there, still not like ordering food from this restaurant, but bhunai is perhaps, from somebody who loves to cook, bhunai is perhaps one of the most important aspects of desi cuisines. You can taste the kacha masala versus a bhuna hua masala in the dish, right? So they want to get you as close as खाना ऑर्डर कर नहीं किया, बस इतना से रह गया, इतना से रह गया, बस वो ना फीलिंग चाहिए, नहीं मैंने घर पे खाना बनाया है। exactly right. और वो cost wise बहुत effective है, right? For a person who's otherwise ordering outside from Food Panda, right? Because you don't have to pay like 10 fees ना। Exactly, right. And also just the fact कि यार like आपका labor free है ना आपके लिए, Yeah, right? exactly. Like not opportunity cost अपनी तो आप नहीं factor in कर रहे। Exactly. Like the way Food Panda is, what it has done, like I have some critics of Food Panda as well in terms of the way they treat the riders, but overall, like Food Panda, the way they've empowered business across the board is exceptional, right? I think customers are more experimental there because एक तो एक बैरियर है जो उन्होंने मीट करना है, मतलब अगर आप वो एक मिनिमम स्पेंड तो करना है, तो मतलब वो दे आर लिटिल मोर केयरलेस विद द प्रोडक्ट्स दैट दे बाय। इट्स नॉट पर्टिकुलरली कि वो एज पीपल एक्सपेरिमेंटल है या वो अगर क्योंकि बट एक मिनिमम स्पेंड उन्होंने करना है, तो देर लाइक ये ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, I would not agree with that, Javeria, because I feel like कि spend meat करने के लिए ना आप 5 या 10 किलो चावल मंगवा लो, सही है। There are easier ways to meet the spend cap, सही है। And Food Panda से ना not a lot of people देखो Food Panda से लोग खरीद रहे हैं ना, वो monthly grocery नहीं करते usually, वो top ups करते हैं, सही है। तो उधर they will find a way to meet that criteria. I think what works is कि a lot of things are on your face. Say that in your face because you see a banner, you see a marketing poster, you see a ad video, right? And you're like, great, let's try, right? So barrier are you right? कि कम है because of that ना physically cash देना है, just a number on the screen. It's fine, right? I'm sure there's a lot of psychology that goes behind it, and that I'd be very interested to learn that honestly, right? More importantly, why I feel is a channel where people are more experimental is because it's a channel that is used by people who are relatively tech savvy. Yeah. Belong to an income strata that allows them to experiment and are accustomed to ordering online. And as all of us know, ordering online is a little bit of an addiction. So yeah. You're like, ooh, just a little bit. What does this button do, right? And you're like, things on the card, right? So I feel that that's what it is for me. जो मेरी conversations हुई हैं from people there, and I did my thesis जो मैंने किया था इधर masters का, that was also in checkout products जो ads आते हैं ना, जो last checkout window से पहले जो ad आता है, in its efficacy in adding value to the order or increasing the order value because you're adding a sauce or a ketchup or like or a drink or a fries or a side or whatever, right? On food delivery apps. And even in that research, I found out that it does work well because last leg of the work, anyways, it's a different story altogether. But what I'm coming back to what you're saying, okay, it's the kind of people shopping online that allows them to be more experimental. A lot of people who shop on Food Panda, a lot of them, because when I work in corporate, I saw a lot of people who come in from different cities of the country, and they were working in Karachi, and they didn't have family here. So yeah, max someone's partner is living with them. Otherwise, वो अलग रह रहे हैं या दोस्तों के साथ रह रहे हैं. And those are the kind of people who don't have time. If they have an hour extra in the day, they would rather go and spend that with a friend or doom scroll like I do. So yeah, then like we do going to this, yeah, like
I don't want to generalize, man. So, maybe other people are doing healthier things in life, but they would rather order it online, because for them, they're like, it's okay if I have to pay 20, 30, 50, 100, 200 rupees extra to get that convenience that you talked about earlier. So I think it's to do with the people there. So e-commerce in that sense is easier to experiment with and try new products on that are, but obviously product relevant होना चाहिए. अगर मैं perhaps what could be a product that wouldn't sell maybe on e-commerce? गाड़ी. गाड़ी तो Bike. चलो नहीं, वो तो high involvement हो गया. I mean like, Yeah. you know, something like I don't know, man. What do old people buy? I don't know. Tell us, Uh, Daniel. What are they buying? Valid. Chani, What do old sorry. people buy? No, it's okay. I am accepting my age now. I'm like, yes. Now 30s are just glaring me in my. I'm like, okay. I don't want to admit something, but that's me too. It's not that far away. Yeah, it's okay. I think what I now, so what I've done, sorry, recording में आ रहा है, but what I've done is what I realized is कि okay. 30 साल के बहुत से लोगों ने ना, बहुत सारे लोगों जिनको मैं फॉलो करता हूँ, सही है, like people like Shahzad Ghyas, I don't know if you've seen his podcast. I love his podcast. Pakistan Right? experience. Yeah, it's spectacular way. I've been following him since like when he started, right? And there was this one episode, or a few episodes where he's been with his friends on the podcast and they talk about age. And everybody's like, 30s when you start living your life. And I'm just like, all is well. All is well. Hey, they say 30s are the new 20s, which I hope that is true. Because 2 साल तो हमारा कोविड खा गया. I don't count. मैं दिल चाहता है 2 साल एज से हटा दूं अपनी. 4 साल, क्योंकि 2 साल रिकवरी में भी लगे कोविड के बाद हमें. It's true. सही है, मेंटली, मतलब नॉट दैट मेंटली हम रिकवर हुए, बट यू नो कुछ तो बेहतर हुआ. Have we really recovered though? हाँ. Have we really Have we recovered really though? I mean, I don't think so. I think COVID, like the fact that COVID is like childhood trauma. Okay? Nobody wants to talk about it, but it happened. It happened. Okay? It happened. It happened. Everybody thought they were gonna die, and now nobody wants to talk about Those- it because We it's did, gone yeah, and we we are made not it. dead. Yeah. Sorry. Because Like, anyway, we made it surprisingly. Yeah, we made वो it. Paul Dead वाली meme होती है ना कि we did it. I can't believe Exactly. it. Exactly. Who would have thought? And who would have? Nobody really. So we all thought we were gonna die, and then we were like, "Oh, we are living again." And then I just feel like during COVID, we were really like we were scared and people were dying, very sad. Yeah, yeah. But also like the privilege at least I had was the fact कि खाना घर पे आ रहा था, सही है, rent पे हो रहा था, बिजली आ रही थी, didn't want, like, unlike 90% of the Pakistan who were struggling to survive, I was very comfortable, right? So with that privilege, I think there was a lot of things that you did on your own that was very like, if you're into art, you would do art, you would listen to music, you had your musicians coming on and doing, live sessions every day. So I think we were very comfortable. Okay, this life is great. And then we were like, okay, we have to go back to वापस work. ऑफिस जा रहा है. So I think that's what did it to us. So yeah. Anyways, coming back to it, I feel like yeah. So e-commerce, you can experiment more often. You can launch new products, and we did that at National Foods, and I feel like that it was very very good because the feedback was in, and we even Instant, like instant. And Instant. what I also tried to do was I linked the CRM team, जो हमारी customer relation management team होती है, and created surveys and then floated them out using third party platforms. Yeah. Okay, let's say if I've sold this, this capo, right, guitar ka online, so I can then reach out to the customer, go like, if you give me a review for this, maybe a 20% discount the next time you want to buy a guitar string. So, using these incentive structures, compared to that, अगर आप एक third party research agency को hire करते हो to carry out a research, it costs you 10 times more. So the financial efficacy, obviously, the results are going to be varying because वो representative sample लेते हैं, there's a lot of science that goes into it. But if you just want to get the gist of something, you just want to understand, directionally चीज को, तो these are good channels to, like engage. I feel like it's also कि digital marketing सबसे बड़ा फायदा यही है कि you have a lot of data to play with because Yeah. we were talking with our advertising की जो teacher है and he was like कि जो conventional marketing होती है BTL, ATL, billboards, ads, TVCs वगैरह उसमें कोई आपके पास data ही नहीं होता, कोई metric ही नहीं होता to figure out कि आपको कौन देख रहा है, उससे कितनी sales हो रही हैं
compared to retail marketing? I asked him also. I talked to him about it कि भाई marketing campaign चल रही होती है तो एक चीज तो नहीं हो रही होती ना. Like there's so much going on. कोई एक campaign चल रही होती है तो in-store activity हो रहा है, ad ये चल रहा है. So like purely like critically एक तो क्रिएटिवली आप क्रिटिक कर सकते हैं, एस्थेटिकली क्रिटिक कर सकते हैं. दूसरा कि आप जो है वो अगर उस पे देखो लेट्स से एडवर्टाइजमेंट्स पर्टिकुलरली, तो हाउ डू यू नो कि दिस पर्टिकुलर एड वर्क्स और वर्क डिड नॉट वर्क, क्योंकि वो तो would be that in-store activity that you did or something that happened at some other activity that was happening. So how do you link it to this? And he was like, you can't really tell because there's no data there. No way to tell. No way Yeah. to tell. I mean, there are ways to tell. Okay. And they again, it's very murky, the waters there, right? Because this तो एक solid KPI आपके पास sales बढ़ गई है ना, so that's a big, like how do you attribute it to this one particular activity that you did? I'll tell you. So yeah, so there are ways to track things, and again, none of this is perfect, right? This is just all trying to get somewhere, right? And this is just my opinion. Someone would be like, "ये बहुत गलत बात कर रहे हैं," and they might be right in their own way, right? I feel like when you talk about marketing campaigns, right? Why do you do a marketing campaign? ये बड़ा important question है, ठीक है? Are you doing it as an, for example, अगर मैं पेप्सी का ब्रांड मैनेजर हूँ, मुझे करना ही करना है, क्योंकि वो टॉप कोई ऑफ माइंड option नहीं कैटेगरी है. मैं अगर वॉल्स में हूँ, वो करना ही करना है, क्योंकि टॉप ऑफ माइंड जिस दिन गया उस दिन कस्टमर लैप्स आउट हो जाएगा. सही है, अनलेस पाकिस्तानी मार्केट में कंपटीशन नहीं है. अच्छा, तो उधर थोड़ा सा कैवियट आ जाता है कि लोग कहते हैं नहीं दिखा रहे, पेप्सी पेप्सी ही अच्छी है. सही है, ये कोक ही अच्छी है, व्हाटएवर, राइट? एनीवेज, मैं बोलना तो बाइकआउट कर लो, लेकिन एनीवेज सही है, पानी पिए सब, ठीक है, बेस्ट फॉर यू. सही है. Stay hydrated, guys. हाँ, एग्जैक्टली. Very important. But coming back to the point, I feel like देखो, so for example, अगर मैं बताऊँ as a brand manager, how did I track it? ठीक है, wrong or right? The way I look at these things is कि अगर मेरा जैसे फैसलाबाद was a challenge, ठीक है. अब फैसलाबाद में जो मैंने मार्केटिंग की है, ठीक है, उससे पहले भी फैसलाबाद में मार्केटिंग हो रही थी. So I did something different, right? तो और मार्केटिंग कैंपेन से पहले अगर आप कोई बड़ी मार्केटिंग कैंपेन करने जा रहे हो, सही है, so it's very important to do a market research study to understand where your brand stands at that point in time. कि 3 महीने रिकॉल कितनी है, 6 महीने रिकॉल कितनी है, 12 महीने की रिकॉल कितनी है, आपकी कैटेगरी पेनिट्रेशन कितनी है. पेनिट्रेशन से मुराद ये है कि कितने लोगों ने केचप साल में एक दफा इस्तेमाल किया, उन लोगों में से कितने लोगों ने नेशनल केचप साल में एक दफा या ज्यादा इस्तेमाल किया. अगर मैं केचप का नाम लूंगा तो नेशनल आ रहे हैं दिमाग में या नहीं आ रहे, राइट? अगर मैं नेशनल केचप का नाम लूंगा तो आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि केचप आपने देखी है नहीं देखी है, राइट? So it's targeting the marketing funnel ना. Yes, to understand कि where does your brand stand at that point in time. So you have your sales numbers, वो आपके पास मौजूद है, सही कि this is let's say फैसलाबाद में 10 लाख रुपए केचप बेच रहा हूँ, ठीक है, 10 लाख रुपए केचप बेच रहा हूँ, उनमें से 60% लोगों ने नेशनल केचप यूज किए 12 महीने में एक दफा, ठीक है, और उनमें से 30% लोग हैं जो नेशनल केचप हर महीने यूज करते हैं, और उनमें से 10% लोग हैं जिनकी कंजम्पशन XYZ whatever the statistic is, right? So you put that all together and try to understand where do we stand right now, and then you do a marketing campaign. And obviously you do multiple things as Deveria mentioned, and that is very true. It's very difficult to figure out कि मैंने जो BTL रन किया था जिना पार्क में उससे ज्यादा इम्पैक्ट आया है, या मैंने जो बाजार में रन किया था BTL उससे ज्यादा इम्पैक्ट आया है. I might not know, right? But हो सकता है जिसने बाजार में BTL देखा हो जाके जिना पार्क के पास वाली दुकान से ले लिया हो क्योंकि वहां वो रहता हो. बट चांसेस आर कि अगर आप जियो लोकेशन पे कर रहे हो जिस उस एरिया की केचप की सेल बढ़ी. तो लाइक अगर मैंने नाज़िमाबाद में मैंने बिलबोर्ड लगाया है और नाज़िमाबाद वाले इम्तियाज से मेरी सेल बढ़ रही है केचप की, so that's how I keep track of it. I would attribute a lot of it to that, right? And then post campaign you do another market research to understand कि did it work? What's the brand recall now? सही है. How many people were part of that campaign? So there are ways to figure out how your good campaign has been. It is difficult, you're right, to figure out what specific about the campaign worked for you, Yeah. right? But I wouldn't say it's not possible to know, because
अब जैसे ऐड की बात करें, आप सब में से कितने लोगों ने सुपर वाले ऐड पे अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाई थी? कोविड के अंदर थे, वो बूम हुआ था एकदम से। I think everybody did it. Right. सर्विस वाला also वो Service Service वाले, वाला. exactly. Yeah. So, and these ads were exceptional ads, right? उसकी brand recall crazy good है, सही है. बहुत So Uh, again, they are going all. Pepsi ने जो करा था क्रिकेट के साथ, I think it's like exceptional. you phone with तेरी मेहरबानी Exactly. just insane. Exactly. So, you know, like there are a lot of campaigns that stick to your brain. You know, they चुपक जाते हैं आपके दिमाग में जाके, and then when you're making a purchase decision, you're like, perhaps this is the brand I want to get. So again, it is trackable, and I feel like now with improvements in technology, it will get better and better and better and better as we move on. But to say that we don't know, I heard it a lot when I was working in organizations as well, where people were like, "Okay, but how do we find out?" And I'm like, there are ways to find there out. are always It's just that they're not 100% accurate, accurate. Yeah. Gives Like- you an idea, like It's like but it does give you an idea. yeah. सही है. And also your campaigns need to be, you know, like again coming back to the campaign, it needs to be customer first. सही है. अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. सही है. यूनिलीवर ने, सही है, एक ब्रांड लॉन्च किया कॉटेडोर के नाम से, which was a premium ice cream. सही है. They had an event where they had all the celebrities, all the rich people, is what I'll say. Okay? Or people with access attending that event. There were multiple desserts that were you made using that ice cream, really good ice cream, right? But they only sold it on certain shops that were relevant to that quote unquote market. वॉल्यूम इतना कम था कि वो ब्रांड बंद हो गया पाकिस्तान में. ठीक है. अगर मैं वही कैंपेन, ग्रेट कैंपेन, राइट, ग्रेट, मतलब जिस जो आपकी टारगेट मार्केट है, जो 400 की जगह 1,500 की आइसक्रीम खरीदेगी, आप उसको ही तक जा रहे हो, सही है. बट अगर मैं वैसा ही इवेंट कर लूं नेशनल रेसिपी मिक्सेस के लिए, फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? नो, बिकॉज that's not your target market. I'm spending a lot of money on maybe creating achar gosh tacos for a demographic that does not make its own food, Yeah. right? Wouldn't work. It does. Yeah. So understanding your consumers is very important for any campaign, and to understand the results of it as well. Care, like, who am I targeting and how do I measure it if they like my campaign? Achar gosh tacos. I They're mean, very they good could though. slap. They By could the way, slap. मखनी हांडी की जो चिकन होती है ना, अगर आप उसका सैंडविच बनाए, कोल्ड सैंडविच, इट्स वेरी वेरी. Anyways, moving on. Yeah. Okay, so demographic का सवाल था, but we've pretty much covered it. Yeah, pretty much Online covered. versus store. Yeah. Demographics, वैसे सब कहते हैं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यहाँ पे my teachers didn't like the word demographics. Psychographics is what we say. सही है. Yeah. And I think it is how it's going to be, because the world is ever evolving and everybody's coming together into these interest-based economies, right? Yeah. But I do still look at demographics. No, but it's because like अगर आप यूरोप या वेस्ट की तरफ देखें, so maybe psychographic is a good way to look at things, because there's not that much difference now, like compared to country like Pakistan जहाँ इतनी सारी disparity है, तो you have to look at demographics when marketing your product. नहीं, I would disagree with that. Just to be the devil's advocate here, I'll give you an example. So again, could be a wrong example. So yeah, yeah. But personally speaking, I feel like अगर मैं ketchup बेच रहा हूँ, ketchup की primary target audience है बच्चे. Yes. 100%, right? Not 100%, like majorly बच्चे. ठीक है. अब मुझे एक बात बताएं, what's the average age of a mother in Pakistan? 27, 28, Younger, I'd say, na, in Pakistan. 24, younger. 22. I'd say younger. Even Javeli, I think you should answer this question because ये तुम्हारे साथ है ना, mansplain कर रहे हैं अपने ideas, ठीक है? From your perspective, तो हम मतलब जब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो देन जी. हम सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन की तो नहीं बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो देन there's a huge rural population. I'd say 16, even 16, 17, 18 would also be, अगर rural को include कर दे तो उससे भी young, but safe bet I'd say 18. right? Great, right? I don't have an answer for this question, but the question was, no, the question, your approach, no, it's not the approach, right? Your approach was very good on this, where you said, "Okay,
I am sure all of my female friends, right, every single one of them has told me how this girl that she went to college with or school with शादी has हो गई उनकी. has 4 kids now. ठीक है? Yeah. Unfortunate the way it is in Pakistan. Yeah, You yeah. know, you don't have the liberty to make your own life decisions. Very unfortunate, but the reality is कि एक खातून जिनने who had the choice and they made a choice to maybe marry late or have kids late. सही है, वो भी एग्जिस्ट करती हैं. सही है. एंड दूसरे एंड पे यू हैव योर खातन जिनकी शादी यंग एज में हो जाती है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. एंड दे हैव अ किड एट अ यंगर एज. ठीक है. सो साइकोग्राफिक्स अगर आप टारगेट करोगे तो यू टारगेटिंग मदर्स, young mothers. By that young mothers, it means like who have young kids, right? Which would be the girl who's 19 and has a kid. सही है, नहीं होना चाहिए, but has a kid. सही है. And then there's this Or girl. if you want that, sure. I mean, choice होनी हाँ, चाहिए. मतलब 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती है और मतलब मैं लीगल वाली एस्पेक्ट हाँ, से बात ये कर तो रहा हूँ. legally तो सही है. सही है हाँ, यहाँ पे. राइट. कि आप 19 साल में बच्चा है और कोई खातून होगी जिनका 32 साल में या 35 साल में पहला बच्चा होएगा. Yeah. Both of them are target market for your sauce, right? Yeah. Ketchup, right? So then it becomes tricky if you take a demographic because आपका average age बैठेगा 24, 23, 22, 25, whatever it is, right? Whatever arbitrary number it is. पाकिस्तान में तो फिर ये भी सीन है ना, या मतलब यू कुड बी लाइक somebody, if अगर आप लोकेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो let's say somebody living in like a Gulshan could be making insane amounts of money working online freelance में, as compared to if you're saying कि okay ये premium product है, I'm gonna target defense for it. So that's also tricky with the kind of economy we have, or that Brilliant, makes it tricky. brilliant example. But दोनों ही जो है ना वो टेस्ट किचन जाते होंगे खाना खाने. हाँ. 100%, Right? yeah. So interest आ गया. You're very right, Javira. That's a very good example. I think it's a better example, honestly, right? Because it makes it simpler. So yeah, 100%. So demographics इसी वजह से fall on their face eventually, right? Because you are generalizing a population set based on your opinion of it or your idea of it based on research पे based होता है 90% of the time, hopefully, right? But you're doing it compared to something like psychographics which are more efficient in terms of वो. But I think conceptualize करना थोड़ा मुश्किल होता है directly at psychographics पे because we've been taught to look at things from a demographic point of view. So what I do is as a वो के पहले demographics सोचा फिर psychographics सोचा फिर उस demographic को psychographic project करके एक broader वो idea बना लिया. सही मेक सेंस. तो एक सवाल हमारा ये भी था कि आप लोगों ने ऑनलाइन डिस्काउंट्स कैसे हैंडल किए? डिड इट लाइक एंगर योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, या इज दैट नॉट अ कंपैरिजन? Oh, there's a story there. No, that's the देखो, this is where you will see me being the marketing person. सही है. I feel like it's a problem क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर बैकडोर चैनल्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं. सही है कि इम्तियाज से मैं जब जनरल ट्रेड में था तो मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा सुना मेरा स्टॉक क्यों नहीं ले रहे. सही है. उसने क्योंकि आप महंगा दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन से. हमने व्हाट डू यू मीन महंगा दे रहे हैं, इससे कहाँ से मिल रहा है आपको. कहता है वेट करें. सही है. उसने अपनी लड़की को एक बंदिया एक खातून है, उन्होंने घर का सौदे का उसको ऑर्डर दिया. किरियाना शॉप थी तारिक रोड के पे. सही है. थोड़ी बड़ी शॉप थी. उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने बंदे को बोला चलो बेटा ये ऑर्डर लो, बाइक पे जाके इम्तियाज बराबर में वहां से लेके आ जाओ. Oh my God. और उसने मुझे बिल दिखाया and I was just like, okay. Heavily saving shelf space, warehousing space, everything. Everything, right? He is working on a hyper local model, to be fair, right? He's like, yeah, Basically. exactly, brilliant business, right? बट मेरे लिए चैलेंज था कि यार वो तो बैक डोर एक ये तो फ्रंट डोर हो गया ना कि वो जाके शेल्फ से उठा के ला रहे हैं. सही, जो नॉर्मल कंज्यूमर की तरह. एक बैक डोर होता है कि कारपोर पे गए 100 डब्बे, 70 डब्बे शेल्फ पे गए, 30 डब्बे पीछे बेच दिए होलसेल को. ये होलसेल से खरीदा, होलसेल से ऑर्डर बना, होलसेल पे ऑर्डर डिलीवर हुआ, वहां से उठ के वो ऑर्डर चला गया आधा सुपरमार्केट. छोटी सुपरमार्केट है, कोई हर इलाके में होती है, कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, वहां चला गया. सो बैक डोर बहुत होता है और ये सारे बैकडोर काम
आपके थर्ड पार्टी ई टेलर्स भी करते हैं। ये एक रियलिटी है मार्केट की। तो जब आप उधर डिस्काउंट देते हो ना, सो दैट डिस्काउंट इज देन यूज्ड टू सेल टू अदर बिजनेसेस B2B, और उसकी कंप्लेन आती है मार्केट से। ठीक है, जहां तक बात है कंज्यूमर फेसिंग डिस्काउंट्स की, कंज्यूमर एंड पे हमें चैलेंज नहीं आता, क्योंकि देखें हमारी प्राइस मैच होती थी समवेयर बिटवीन इम्तियाज एंड किराना स्टोर। ठीक है, जो हम शेल्फ प्राइस रखते थे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कैंपेन्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो इंसान किराना स्टोर जा रहा है, जो इंसान ई कॉमर्स ले रहा है, वो यूजुअली किराना स्टोर नहीं जाता। सही है, और वो एक केचप की नहीं है ना, फूड पांडा से ऑर्डर नहीं करेगी, उसकी केचप उसको 250 रुपए की केचप 500 रुपए की पड़ जाएगी, इंक्लूडिंग डिलीवरी फीस, स्मॉल ऑर्डर, दिस दिस दैट दैट, राइट। तो आइसोलेशन में कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करता, इट्स ऑलवेज प्लेस्ड विद अदर प्रोडक्ट्स, और दे विल जस्ट गो एंड बी लाइक ठीक है 5 रुपए यहाँ बच रहे हैं मेरे केचप पे ई कॉमर्स पे, बट किराना स्टोर से अगर लूंगा तो मेरे बाकी 200 रुपए बच जाएंगे, क्योंकि मैं डिलीवरी फीस वगैरह में दे रहा हूँ। सो उधर चैलेंज नहीं आता था। लोग बोलते हैं, सेल्स इज ऑलवेज गोइंग टू कंप्लेन अबाउट कि आपका पांडा मार्ट पे इतना सस्ता है, आपका चीते पे इतना सस्ता है, आपका इस पे इतना सस्ता है, एंड अंडरस्टैंडेबल, राइट। जब आपका नंबर नहीं हो रहा था तो आप बोलते हो यार ये भी ये भी ये भी, but to be fair, logically speaking, your consumer is not affected by the price point on Food Panda versus Imtiaz, because वो दोनों channels operationally ही बहुत फर्क तरीके से काम करते हैं। However, the back channel is a problem। तो उसके अंदर फिर आप ये करते हो कि आप फ्रंट एंड से जो सेल्स होती है ना, जो मैंने करा था कि लेट्स से एक होता है कि मैं उनको जो उसका बिल बनता है ना ऑर्डर का, उसका जो ऑर्डर का बिल है उस पर डिस्काउंट दे। अब वो डिस्काउंट चला गया है फूड पैंडा के पास, एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू विद इट। Compared to that, if I give them a discount on tertiary sales, you claim the discount for me कि मैंने 100 पैक बेचे तो 20 रुपए पर पैक के हिसाब से 200-2000 रुपए आप मुझसे ले लो। दैट्स मोर एफिशिएंट, और उधर फिर आपका बैकडोर कम हो जाता है, अगेन जीरो नहीं होता, बट देयर आर वेज टू मिटिगेट इट। बट कंप्लेंट्स बहुत आती थी और हमारी बहुत लड़ाई होती थी। Okay, so जो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि you left National Foods in I think 2024, January if I'm not wrong. 2024। Just as the Q-commerce market, was maturing and consolidating in Pakistan. Yes। Where do you see the future of FMCG branding, or is the dark store going to replace the Kirana store, or will they coexist? यार आई फील लाइक कि पाकिस्तान में काफी कंसोलिडेशन हो गई है। ठीक है, पार्टली थैंक्स टू द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि जब आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, फाइनेंसिंग कम हो गई, ओवरऑल ये सारे नेगेटिव पीएनएल पे काम कर रहे थे, सस्टेनेबल नहीं थे, अनलकी भी रहे कुछ, A lot बट of them closed down, closed up. some were just bad at what they were doing, so mix of it। तो दे क्लोज डाउन। तो अब जो है ना मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, सही है, और क्यू कॉमर्स का फ्यूचर में डार्क स्टोर्स और किरियाना जो को एग्जिस्ट, हाइपर लोकल मॉडल का अगर आपको पता हो तो मैं So बता can दूं। you elaborate on हाइपर that? लोकल मॉडल इज वेयर लेट्स से आई लिव इन नॉर्थ नाजिबाद। ठीक है, अब नॉर्थ नाजिबाद के अंदर 50-100 दुकानें, 100 दुकानें लेट्स से, ठीक है, जो कि उस जियो टैग लोकेशन के अंदर आ रही है, दैट आई कॉल नॉर्थ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा दुकानें होती हैं। अब फूड पांडा के पास दो ऑप्शन है, या तो वो नॉर्थ नाजिबाद में डार्क स्टोर खोले, वेयर हाउसिंग पे करे, लोग रखे और बेचे, जो वो कर रहे हैं, वेरी कॉस्टली बट वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि नॉर्थ नाजिबाद के अंदर जो जिलानी सुपर स्टोर है उसको फूड पांडा ऑनबोर्ड कर ले और उस दुकान से प्रोडक्ट उठा के मुझे डिलीवर कर दे। उसमें उसके मार्जिन कम हो जाएंगे, बट उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। Because he's saving money on warehousing and rent and stuff. एग्जैक्टली। सो हाइपर लोकल मॉडल जैसे यूके के अंदर दोनों मॉडल्स कोएग्जिस्ट करते हैं। इधर की मार्केट पाकिस्तान से कम मैच्योर है इस वक्त, इधर अभी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, राइट, और नए नए, सही है, हर So सुपरमार्ट UK ने में अपना थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म निकाल लिया। so UK में Q-commerce क्या companies like the brands have their own shops जहाँ से वो बेच रहे हैं? यार क्या यूके सीन के है? अंदर जैसे उबर ईट्स है, उबर ईट्स पूरा हाइपर लोकल पे काम कर रहे हैं, उनके पास Okay. डिलीवरी का ऑप्शन ऑलरेडी है, राइडर्स एग्जिस्ट करते हैं,
वो कर रहे हैं काम not through a dark store. There's no Uber store. They are hyper local stores. उन्होंने collaboration की हुई है Sainsbury's के साथ, Co-op के साथ, your Tesco's and everything, उनके साथ वो order उठा के वहाँ से deliver कर देते हैं. सही है. पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा different है क्योंकि पाकिस्तान में population density ज्यादा है. Dark stores are more feasible. So the way I look at it is I look at it from a perspective where they will coexist, right? And whoever cracks hyper local properly first might drive the market because I feel like उधर कॉस्ट सबसे ज्यादा कम है आपकी और ना एक्सपायरी की टेंशन है आपको ना आपको डैमेज की टेंशन है. नहीं तो बट इफ यू लाइक डीलिंग हाई विद अ हाइपर लोकल मॉडल तो फिर आपके जैसे आप बताए थे कि यू वुड ऑफर डिस्काउंट टू फूड पांडा तो वो कैसे ऑपरेट करेंगे ब्रांड्स डायरेक्टली तो डिस्काउंट नहीं दे सकते ना टू द डिलीवरी ऐप अगर वो एक किराने के स्टोर से खरीद के लेकर आ रहे हैं सामान सही बात है. दैट्स वेरी ट्रू. तो उधर फिर ये होता है कि फिर उधर आप जो है ना वो अब द वे इट वर्क्स देन इज कि आप डिस्काउंट्स देते हो कोऑप को टू सेल ऑन देयर ऑनलाइन और वो कोऑप लिस्टेड है दिल्ली. कोऑप की अपनी भी है बट कोऑप उबर ईट्स पे भी लिस्टेड है. सो इट्स अ लॉन्गर रूट टू गेट आई टू थिंक वेयर यू इट्स वांट टू गेट. लाइक इट्स मोर feasible फॉर द डिलीवरी कंपनी में भी हाइपर लोकल बट ब्रांड के साथ ज्यादा कंट्रोल है वैसे ही अगर डार्क स्टोर एग्जिस्ट करें Yeah, थोड़ा सा इधर डायनामिक. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑनेस्टली बिकॉज ब्रांड्स के लिए डायरेक्टली करना मुश्किल होगा इसके अंदर एंगेज 100%. But वो ये कि then they might work with Food Panda and see कि if they can put an ad and then a link to a credible store. For example, अगर hyper local में Spar मेरे पास added है, so then I might work with Spar and Food Panda and make sure that I can run a campaign that is run through Spar and Food Panda together Oh, on a yeah, hyper local that model. makes sense. Yeah. तो किराना स्टोर पे इसको इन्विजन करना थोड़ा मुश्किल है. सही है पर But और सुपरमार्केट जो एरिया वाइज होती हैं उसमें ज्यादा बेहतर हो हाँ सकता है ये ऑल्सो लाइक हाइपर feasible. लोकल के अंदर भी एक और तरीका होता है which is like you list it as your own product, but you buy it from a shop and then sell it. This is not common in Pakistan, but it does happen sometimes. So, And udhar you have the capacity to then run it like you run your dark store. But you're right, कि marketing or branding would not be as convenient. Especially अगर मुझे सैम्पलिंग वगैरह करनी है या अगर मुझे जैसे मैंने जो बात की बकरीद डेटा वाली बात बेसिकली अगर की. आपको कलेक्ट करना है तो डेटा कलेक्शन में तो और बात डेटा बहुत इज ज्यादा नॉट अ इशू है प्रॉब्लम बिकॉज देखो थर्ड पार्टी ऐप पे ऑर्डर आ रहा है उसका हाँ डेटा मेरे एक्चुअली पास है. राइट सही है हाँ तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. इट इज मोर अबाउट कंट्रोलिंग व्हाट यू आर सेलिंग एंड इंश्योरिंग कि आप अपनी कैंपेन्स रन कर सको which is something that is not possible in a purely hyper local model where लोकल मॉडल you're या working with just kirana stores. Right. थैंक यू सो मच Thank you so much, Dadia. No This worry has been guys. a very, very, very informative session. Thank you so much या guys for having me here and बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके. अच्छी conversation हुई and you guys have some really good questions, some really good ideas. I think um, मैं भी सोचूंगा शायद इस कॉल के बाद कि यार हाइपर लोकल पे कैसे करेंगे मार्केटिंग करना. शुक्र है हाइपर लोकल नहीं था. आई एम जस्ट ग्लैड कि मेरा काम हो गया. मैं प्रमोट हो गया था उसके बाद. आई वाज लाइक बाहर से ग्रेट. Thank God for less challenges. But thank you so much. Yeah, it was lovely and best of luck for your project and best of luck for your degree. बहुत मजा आने वाला है. I think corporate is a lot of fun. I genuinely can't wait to get back into corporate. It's उसका अपना अलग नशा होता है आपको. हाँ तो 10 on 10 would recommend. 10 or 10. It's also the money that comes with it, right? It's like okay. That helps a little bit, no? Oh, no, it's all that is, the 1 day before you get paid and the 1 day after you get paid and the day you get paid are the 3 best days of the month. Other than the days that you have taken off from your, yearly vacations. मिलती हैं. और अगर वो दिन कोइंसाइड कर जाए तो उफ क्लाउड नाइन We used to call, sometimes we'd get our salaries on a Friday Ooh. and we'd call it the holy grail of Fridays because you are like, because I would meet my friends every Friday, evening, we would sit for chai and we would play like sequence. तो we would be like, great यार आज तो पैसे आ गए आज तो कुछ अच्छा खाएंगे bro. मस्त. So yeah. वो होली ग्रेल पे पूरे महीने के लिए भारी पड़ जाती है यार actions have consequences वो तो जाहिर सी बात है पर उस पर कौन सोचता है जब मजा आ रहा होता है. वो तो फिर महीने की 20 तारीख के बाद ये like oh shucks. All right guys, thank you so much yaar for having me and टाइम take care.